welcome to this new tutorial. And today we are going to talk about what is government. So let's begin and understand the meaning of government and what exactly government stands for. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि एक सरकार क्या होती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। What do you think of when you hear the word government? Does the Parliament building at the New Delhi comes in your mind? Or does it that you get your state legislative building in your mind? Or maybe you get a mental picture of the president, the prime minister, or cabinet picture. Moreover, you might even think about words like power or control or rule or simply politics. So can we try and understand or define what is government? Now, before we begin talking about the government, let us first understand that government is so ingrained in our culture and so much part of our everyday life that most of us, when asked, can't offer a very good definition of the actual word. So what exactly the government is? So, एक सरकार क्या है? ये सरकार कौन है? क्या आपके दिमाग में हमारे पार्लियामेंट का पिक्चर आता है? या फिर क्या आपके माइंड में आपके स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का पिक्चर आता है, उस बिल्डिंग का पिक्चर आता है? या फिर आपके दिमाग में हमारे प्रेसिडेंट का या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का या फिर कैबिनेट पिक्चर हमारे दिमाग में आता है जब भी हम सरकार के बारे में सोचते हैं या फिर सरकार के या फिर जब हम सरकार या फिर गवर्नमेंट ये शब्द सुनते हैं? या फिर ये कि जब भी आप सरकार का नाम सुनते हैं या फिर गवर्नमेंट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कोई पावर का चीज़ आता है, कोई कंट्रोल, कोई रूल, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो आपके दिमाग में कोई पॉलिटिक्स या ऐसी चीज़ आती है? सो ये सब कुछ जानने के लिए हमें गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे डिफाइन की है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके पहले हमें ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो गवर्नमेंट है या फिर जो सरकार है ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है। ये हमारे सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है, हमारे रोज़मर्रा जीवन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज जो भी हम एवरीडे जो कुछ कर रहे हैं इसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसीलिए जब भी हम गवर्नमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो अमूमन हम एक अच्छा डेफिनेशन ऑफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक इंसान के लिए गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट है। आई विल डिफाइन गवर्नमेंट डिफरेंटली, अ लेमैन विल डिफाइन गवर्नमेंट डिफरेंटली। और इसीलिए देयरफॉर डिफाइनिंग गवर्नमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए अगर हमको गवर्नमेंट के बारे में समझना है, जानना है, तो उसे डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू Merriam-Webster डिक्शनरी it offers 3 definitions of government. First, the group of people who control and make decisions for a country, state, and etc. Second, a particular system used for controlling a country, state, and etc. And third, the process or manner of controlling a country, state, and etc. So these are the 3 definitions given by Merriam-Webster dictionary, and in all these 3 definitions there is something common, that is
controlling a country, state, and etc. Whether it is a process or whether it is a group of people or whether it is any particular system which controls a particular country, which controls the state and everybody in that part of the state, which facilitate a smooth functioning, which facilitate a basic requirement for the people, can be called as government. According to Merriam-Webster डिक्शनरी 3 तरह का डेफिनेशन दिया है गवर्नमेंट के लिए। एक डेफिनेशन कहता है कि एक ऐसा ग्रुप जो कंट्रोल करता है या फिर कोई डिसीजन लेता है किसी भी देश के लिए या फिर स्टेट के लिए, या फिर दूसरा एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कंट्रोल करता है किसी भी देश को या फिर स्टेट को, या फिर थर्ड एक ऐसा प्रोसेस और ऐसा एक मैनर होना चाहिए जो स्टेट को कंट्रोल करता हो या फिर देश को कंट्रोल करता है। तो ये सारी तीनों डेफिनेशंस में जो कॉमन बात है या फिर कॉमन टर्म जो है वो है कंट्रोल द कंट्री, स्टेट एंड एक्सेट्रा। और हमें यही समझना है कि सरकार एक ऐसी चीज़ है कि एक ग्रुप भी हो सकता है लोगों का जो देश के लिए कानून बनाता रहे, देश को कंट्रोल करता रहे और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता हो। एक ऐसी पर्टिकुलर सिस्टम भी हो सकती है जो देश को कंट्रोल करती हो और स्टेट को भी कंट्रोल करती हो, या फिर ऐसे एक प्रोसेस बनाया जाए जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में आता है। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल है, यही एक स्ट्रक्चर बनता है एक सरकार का। और सरकार का काम यही है कि लोगों के हित के लिए डिसीजन ले, कंट्री को कंट्रोल करे, उसको स्टेबिलिटी दे, उसको पीस में रखे और एक अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत लोगों का भला करे। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन गिवन बाय Merriam-Webster. Next we have is Harold Damrow. According to Harold Damrow, government is responsible primarily for making public policy for an entire society. It is the steering mechanism for a given society. It forms the policies that keeps a particular society heading in the right direction. So what exactly Harold says here, that government is responsible primarily for making public policy for entire society, and that is a primarily job of any government, that it must make a public policy for the entire society without any discrimination. It is in fact a steering mechanism for the society, because society has to function together and there need to be some kind of a mechanism. So government provides that mechanism. It also forms the policies that keeps the particular society heading in the right direction. If your society has to head in the right direction, then the entire command is in the government. Whichever governments comes into the picture, if they have an objective, if they know the vision, then they can move the society together to achieve that objective, and therefore government has a very important responsibility. According to Harold जी का कहना यह है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो मूलभूत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक पॉलिसीज बनाए सारी सोसाइटी के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट जो होता है वो एक मैकेनिज्म रहता है हर एक सोसाइटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। अगर सरकार के पास कोई विजन है, सरकार की अगर अच्छी मंशा रहेगी, तो वो एक सोसाइटी को हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। और इसीलिए सरकार जो है
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका जो दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है, ये उसे हमेशा लोगों के लिए निभाना ही पड़ेगा। That is what according to Herald. Next we have is Black's Law Dictionary, and according to this, the government regulates the relationship among members of society and between society and outsiders, and that they have authority to make decisions for the society to meet goals and maintain orders. Very simple. Now, according to this dictionary, the government regulates the relationship among the society, between the society and outsider. Very important. Government becomes a platform. Government creates that space wherein there is a specific relationship, and that relationship has to be regulated by the government among the members of the society, sometime between the society and sometime with outsider as well. And government must make a decision for any society if they want to achieve any goals or to maintain order. It's very obvious that if any society has certain objective to achieve, certain goals to achieve, then the direction must come from the government. Government must come with a mission. Government must come with certain decision which could help any society to achieve their goals as well as to maintain law and order problems in the state. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सरकार को हमेशा जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में उसको रेगुलेट करने का कर्तव्य है। रेगुलेट मतलब लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना, ताकि लोग आपस में अच्छे रिश्ते बनाए रखें, बल्कि दो सोसाइटीज़ में भी इंटरेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी कह सकती है। एक सोसाइटी इवॉल्व होती है जब भी लोग आपस में मिलते हैं, सोसाइटीज़ इंटरेक्ट करते हैं, और कभी कभी हमें आउटसाइडर से भी कांटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जिसका डायरेक्टली हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है, और इसीलिए सरकार का काम यही है कि सरकार एक व्यवस्था बनाए ताकि उस व्यवस्था में जो आम लोग हैं उनका इंटरेक्शन रहे, अमॉन्ग द सोसाइटीज़ में इंटरेक्शन रहे, एज वेल एज आउटसाइडर से भी इंटरेक्शन रहे। और सरकार को हमेशा एक नीति अपनानी पड़ती है, एक विजन रहना चाहिए कि अगर हमें कोई भी गोल या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर हमें अचीव करना है सोसाइटी के लिए, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस गोल के लिए सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी, लोगों को एक विश्वास देना पड़ेगा, और उसी तरीके से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉज डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज। And last, to summarize, government, whether we refer to the system or institution in operation, the group of people in charge, or the process in use, is authority that sets rule for society, helps its members relate to one another, to offer and to keep it running smoothly, securely and peacefully. So end of the day we have to remember that the government, whether we refer to any system or an institution, the group of people in charge or the process in use, above all, the government, the authority must make certain rules for the society. It must help the member of the societies to relate with one another. It must offer them, and it must keep it running smoothly, securely and peacefully for the welfare of the society. So
This is all about understanding the first part of the government, that is, what is government or the meaning and definitions of government. I hope you have understood this part of the tutorial. I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.